हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फ्लुएंट। होप यू ऑल आर गुड। एंड आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू यूजिंग HTML. सो लेट्स स्टार्ट लर्न समथिंग न्यू। एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है। एंड बाय द वे, मैं सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस सबलाइम टेक्स्ट 3 ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फाइल सेव करते हैं HTML एक्सटेंशन के साथ। सो कंट्रोल S एंड सेव register.html। नाउ मैं एक बेसिक HTML फॉर्मेट क्रिएट करने वाला हूँ विद यूजिंग ओपनिंग टैग एंड HTML। एज यू कैन सी, यहाँ एक बेसिक फॉर्मेट ओपन हो गया है। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज कर रहे हैं तो ये कोड ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। अगर कोई अदर कोड एडिटर यूज कर रहे हैं तो आपको ये दोबारा पूरा लिखना पड़ेगा। अब मैं रजिस्टर फॉर्म लिखने वाला हूं इन बिटवीन टाइटल टैग। अब एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए मुझे बॉडी सेक्शन में एक टैग यूज करना होगा जिसका नाम है फॉर्म। सो नाउ मुझे एक टेबल टैग यूज करना होगा इन बिटवीन फॉर्म टैग। सो table. Now under table tag, create first row with tr. Tr tag and closing, and td between tr means table data. Between td में हम name and input details create करेंगे, like name and again another td, then then input tag, and in type we are going to type text. Again type tr for entering passport field, like tr tag, then open a td tag and write password between this. Type td again for password input field and open an input tag between this td, and in type write password. Let's see इसका आउटपुट क्या आया है। As you can see, name, password and input fields. अब हम एक टेक्स्ट कोड करेंगे इनपुट बॉक्स के लिए with using placeholder attribute and type name, and same with password. Placeholder is equal to
password. Here you can see name and password. Now open a tr and td tag again to place gender. Gender. Now add another td to choose male or female and open an input tag and in type write radio and in name type gender. Then after this tag write male and again same with female. So input, then in type you have to write radio, then gender and then female. Now open an tr and td tag again for email and write email and then open another td for input and then enter input tag and in type write mail and don't forget to place a placeholder attribute. As you can see now it's look better than before. Now add another tr and td for phone number. So tr and td and then phone number. Then add another td for country code selection. So for do that add an select tag and under select tag select an option tag where we can write our country code like 9 were for India and just copy this for add more options 92 3 and 4 for examples. And after this select tag open an input tag for phone numbers. In type you have to write phone and then don't forget to place a placeholder in this case which is some random numbers like and then now open an another tr and td for the submit button and another td open an input tag and in type write submit then value equal to
submit. And then just close your table tag and just save it and see कि आउटपुट क्या आता है. As we can see, name, password, gender, email, this box, country code box and submit button. So it's your turn. So try it by yourself. And if you like the video, then don't forget to share, like this video, and also don't forget to subscribe Gyan Fluent. Thanks for watching.